Hello there, good morning. So today is day 3 in Ladakh and we are having our breakfast. So हम लोग निकलने वाले हैं 8:30 एंड अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ ब्रेकफास्ट 8:30 स्टार्ट होता है बट हमने कल इन्फॉर्म कर दिया था दैट वी विल बी लीविंग एट 8:30. सो हमें अर्ली ब्रेकफास्ट चाहिए. सो दे हैव मैनेज्ड something for us. So I'm having cornflakes and milk and we have anda bhurji, we have bread toast, we have chocos and these kind of things. And yes, so we're getting really late, so I'll have my breakfast and then we will leave. Hello there. So after having our breakfast we have left. Now हम लोग travel करेंगे अभी 5 hours to reach a place called Khardung Pass. So Khardung Pass is the highest motorable peak, highest motorable pass in the world at a height of 18,380 feet. So काफ़ी high point पे है. So we are carrying oxygen cylinders in case it's required. And after that we will go to Nubra Valley, which is a little lower than that. So yeah, that's the plan for today. और अभी खारदुंग पास के रास्ते में we'll see अगर there are some good spots then we will stop and we'll take pictures. Amber is having a little bit of headache, which is concerning for me, not for him. We have checked our oxygen levels. तो हम दोनों का ऑक्सीजन 85 है, which seems decent यहाँ के लिए. I think he has not slept properly, that's why it's happening. But अभी वो सोएगा कान में, then hopefully it will be good. And yeah, rest all good. I'm feeling better. कल रात मेरे को भी बहुत ज़्यादा headache हो रहा था. I took Crocin last night. We both took Crocin last night. And मैं बहुत सारा Vicks लगा के सो गई थी, so it worked out for me. But I guess it didn't work out for him. So yeah, hopefully it'll be fine soon. We're going up, up, up. खारदुंग पास. तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लग सकते क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है. सो विल स्टे हियर फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वी लीव. फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं कुछ. We have reached Khardung Pass. This is the spot. Everybody is clicking pictures. It's very beautiful. Very cold out here. बहुत ठंड है. Done with खारदुंग पास and now we are leaving. तो खारदुंग पास से थोड़े से नीचे हम लोग यहाँ रुके हैं फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज वहाँ पे हम ज़्यादा रुक नहीं पाए. यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हैं एंड भीड़ है बहुत. दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल स्पॉट. पूरा आइस है माउंटेन्स पे. फीलिंग बेटर. अभी हम लोग जाएंगे नीचे. अब हम लोग बस नीचे ही जाएंगे. टॉप था खारदुंग एंड अब वी आर गोइंग डाउन टूवर्ड्स नुब्रा वैली. बस रास्ते में रुक के जहाँ भी अच्छे फोटोजेनिक स्पॉट्स होंगे विल टेक पिक्चर्स एंड या स्पॉट है. यहाँ पे थोड़ी धूप भी निकल गई है तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम फील हो रहा था. बट हियर इट्स गुड. नाउ वी आर गोइंग बैक इन आवर कार. आ रहे ना. Amber is taking oxygen. आ रहा होगा. Hello there. रास्ते में भी have stopped here for चाय. यहाँ व्यू काफ़ी अच्छा है. आगे पूरा वाटरफॉल है. सो बहुत ही प्यारा व्यू है, प्यारा वेदर है, ठंडी हवा चल रही है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली जाएंगे हम लोग. एंड आज रात का स्टे वहीं पे है. वी आर हैविंग लेमन टी. यहाँ डाइजेशन का थोड़ा इशू है, सो डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है. दैट्स व्हाई यू शुड ईट
हमेशा फुल स्टमक से थोड़ा कम खाना चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव इश्यूज। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Come for ATV ride. Our number is 80 and 76 चल रहा है. Every ATV is going for 3 to 4 kilometers. So it's taking around 10 minutes. Waiting for our turn. So we're gonna go on the ATV ride. फोटोज़ हमने खींच लिए हैं इसमें बैठ के. सो दिस इज स्टैटिक राइड जहाँ पे सब लोग बैठ के फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं. एंड जो मेन है जिस पे हम बैठ के जाएंगे वो एक्चुअली आती है एंड फटाक से सब बैठ के चले जाते हैं बिकॉज देयर इज़ नो टाइम फॉर पिक्चर्स. इसलिए हमने पिक्चर के लिए एक अलग लगा दिया है विच इज़ गुड मैनेजमेंट. सो या 79 नंबर चल रहा है. आर्स इज़ नंबर 80. वेटिंग फॉर आवर टर्न. रियली एक्साइटेड बिकॉज जो भी आ रहा है दे आर लाइक वेरी हैप्पी विद द राइड. सो होपिंग द सेम. लेट्स सी. संभाल लेना, वेट भी यूज नहीं होता पर अब ये छोटे से गाड़ी कंट्रोल होता है. चलो लेट्स गो. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. So इनको स्कूटी नहीं आती है, बाइक नहीं आती है, बट आज ये ATV चला के अपने कॉन्फिडेंस के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है. उसके बाद ये बोलेरो और ट्रक भी चला सकती है. क्या कर रही हो? क्या था?
had an amazing experience. बहुत मज़ा आया, बहुत. मैंने ज़्यादा चलाया, इसमें बेचारे ने कम चलाया, but it was out of the world. मतलब वो स्लोप पे जब आपको सामने दिख नहीं रहा होता कि नीचे क्या है रोड, ऐसा जा रहे हो, बस आपको हिल दिख रहा होता है और नीचे का नहीं दिख रहा होता. कितना डीप है वो भी नहीं पता. जब आप टिप पे पहुँचो तो पता चलता है ओह इतना डीप है, एंड सडनली यू गो zoom. Very great experience. मतलब must try if you're coming here. Must try.